Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are continue with KVS PGT and today we are here with the poem as we decided to be continue with the poem almost for 5 or 6 days and then again coming back to the stories. And today we are going to study a poem from Kamala, My Mother at 66. Kamala, My Mother at 66. Okay, previously we could study some of the stories that were related to the chances in our life and especially to make our career. As we see, there is an opportunity and that was shown. And today we are going to study a poetess who is supposed to be an epitome of feminism in India, and especially she can be considered as the forerunner of the modern English poetry in India, and right, she is considered a confessional poetess as well. So before we move, we have some questions from the question session, and then we'll come to the detailing of this poem, and we'll move with the text of the poem and many more things that seems to be possible here to discuss on My Mother at 66. So before we go to the text, we have to go through the question session, and here is the first question of the day. What's the name of the author who wrote the work Lost Spring? What's the name of the author who wrote the work Lost Spring? Okay, and we have the answer. That starts with the reply of Sarita. She is followed by Subhash, not is Kalpana. They have answered it correct, and that is Anis Jung. Okay, going with the next. Whom did M. Hamel consider to be responsible for the poor education of friends from the last lesson? Whom did M. Hamel consider to be responsible for the poor education of friends from the story The Last Lesson? Okay, and we have the answers. That does not seem to be very perfect. Actually, he considered not only himself, but the parents of friends as well to be responsible for the poor education of the child friends. Going with the next. How many people did live in Simapuri from the story Lost Spring? How many people live around Simapuri from the story The Lost Spring? And we have the answer from Sarita. She is followed by Kalpana, and that is there are 10,000
Okay, that's good. Going with the next. Which lesson has the reference of river Yakima? Which lesson has the reference of the river Yakima? Okay, and we have answer from Kalpana. She's answered it correct. To be deep water. Exactly. What was the name of the blacksmith from the story The Rat Trap? What was name of the blacksmith from the story Rat Trap? And we have no answer. It says Storm. That was the name of the blacksmith. Okay. Which award did Nick Middleton receive in 2002? Which reward did Nick Middleton receive in 2002? I repeat, which reward did Nick Middleton receive in 2002? And we have no answer so far. Okay, the right answer is Royal Geographical Society's Ness Award. Okay, going with the next. When was the essay Silk Road published? When was the essay Silk Road published? I repeat, when was the essay Silk Road published? And there's no answer. Okay, it's a 2005. 2005. 2005. Okay, going with the next. What was the complete name of William Douglas? What was the complete name of William Douglas? Okay, so we have the answer. That comes here from Sarita. And she answered it correct. The right answer is William Orville Douglas. Okay, she's followed by Kalpana. Going with the next question. And what's the name of the president who appointed William Douglas to be almost youngest justice of the Supreme Court in the United States? What's the name of the president who appointed William Orville Douglas as to be the youngest justice in the Supreme Court of United States? And we go with the answers on the screen from Subhash, followed by Sarita, Kalpana. They have all answered it correct, and that's Franklin D. Roosevelt. And now we'll move with the next one. Which war is the base for the last lesson?
Which war is the base for last lesson? Okay, it's Franco-Prussian War, Devendra. So Franco-Prussian War. Okay, moving with the next. What was the name of the first collection of poems by Elizabeth Jennings? What was the name of the first collection of poems by Elizabeth Jennings? I repeat, what was the name of the first collection of poems by Elizabeth Jennings? Okay, and we have the answer from Sarita. She is followed by Subhash, Natsa Devin, Kalpana. They have answered it correct, and that is the poems which was published in 1953. Going with the next one. What was the name of the daughter of blacksmith master? Iron master from the rat trap. What was the name of his daughter? I repeat, what was the name of the daughter of Iron Master from the story The Rat Trap? And here we go, the reply of Sarita and Subhash. They have answered it correct to be Edla Williamson. Now it is Devin. Okay, going with the next. What's the name of the beach which started the fear in the heart of the narrator in the story Deep Water? What's the name of the beach that started the fear of water in the heart of the narrator from the story Deep Water? Oh, YMCA is a pool, it's not beach. Okay, and the right answer from Kalpana, Subhash and Sarita. They have all answered it correct. The right one is California Beach. Okay, going with the next. What's the name of the grammar portion that seems to be very difficult for friends to learn? What was the name of the grammar portion or part which seems to be very difficult for friends to learn? Grammar portion from the last lesson, and we have answer from Devin is answered it correct to be participle. Okay. What was the name of the rat trap seller? What was the name of the rat trap seller? What was the name of the rat trap seller? Oh, that's not the exact name. It was nickname. His name was Captain Von Stone. Captain Von Stone, that was the name of the red trap seller. Okay, going with the next. What's the name of the literary person with whom Alphonse Daudet was compared? What was the name of the literary person whom Alphonse Daudet was compared?
Okay, and we have no answer. It was Charles Dickens. When was the lesson, the last lesson published? When was the lesson, the last lesson published? And we have the answer from Devin, followed by Sarita. Okay, it's a Kalpana, Subhash. They've all answered it correct. And the right answer is 1873. Okay, now I'll move with the next. And that would be the last. Who wrote Unveiling India, that was published in 1987 as a travel diary? Who wrote Unveiling India as a travel diary in 1987? I repeat, who wrote Unveiling India in 1987 as a travel? And we have the answer from Subhash, is followed by Sarita, Devin, and Kalpana. They have all answered it correct. The right answer is Anis Jung. Okay, now I'll move with the poem and the poetess. That is My Mother at 66 from Kamala Das. Before we move, we have to go through the short description on the life of Kamala Das as a poetess. Then we'll come to the poem to study here in the class. Well, Kamala Das, as I told you, is supposed to be the forerunner of the modern Indian poetry in English. Okay. Kamala Das was born on 31st March 1934. And she had the pen name of Madhavi Kutti. As her pen name. Madhavi Kutti is the pen name of Kamala Das. She was born in Punayurkulam, Thrissur district in Kerala. Punayurkulam. In the Thrissur district. In Kerala. That's her birthplace. It is very close to Malabar coast.
She was the daughter of V.M. Nair and Balamani Amma. V.M. Nair was father and Nalapat Balamani Amma was mother, so they were the parents. Especially Balamani Amma was known as the poetess of motherhood. Balamani Amma was known as the poetess of motherhood. Kamala Das had a controversial lifestyle that actually goes with a storm in 1999 when she converted into Islam. Into Islam in 1999, and the same year the poem My Mother at 66 was published. The poem was published there in 1999. She had her early education at birthplace Punyarkulam, and then most of the time she received education in Calcutta, especially in Catholic boarding school. Catholic boarding school in Kolkata these days, and in those days it was Calcutta. So she received her education at Catholic boarding school in Calcutta, and she had been controversial, especially for speaking of women as a feminist poetess. She was a feminist poetess and is considered as a confessional poetess as well. Confessional poetess. Actually, confessional poetess or poetry was a term introduced by M.L. Rosenthal while reviewing the life of Robert Lowell. So Robert Lowell and his poems were actually from the work of Robert Lowell, that was Lives. M.L. Rosenthal wrote a review, and at that time he used a confessional poet and confessional poetry, and from there, even in India, we have some poetess or poets to be considered a confessional poet or poetess, and Kamala Das is one of them, including Sylvia Plath and this I like to say you, Robert Lowell as well. She started writing
and she had been greatly influenced by her mama actually, and he could support throughout her life Nalapat Narayana Menon. Nalapat Narayana Menon had early influence on Kamala Das as a child, and she started writing love poems. Influenced Kamala. Later on, she could write lots of works, and especially an introduction is very, very familiar to anyone. It is a poem of Kamala Das that reveals the identity of a lady and the result of getting married to Madhav Das Nalapat. She had the experience, and this type of, especially marrying actually K. Madhav Das, complete name, K. Madhav Das, had the experience that she shared was the husband whom she married when she was just 15-year-old, and the experience of her marriage as a painful comes here in this work. She was actually shortlisted for the Nobel Prize in 1984, but never received, shortlisted for the Nobel Prize in 1984, as I told you, but she never received it, but she was shortlisted. She received Sahitya Akademi Award in 1985. Sahitya Akademi Award in 1985 she received. Many more awards are there in her lap, and we can see that she actually in the real sense established the Indian English poetry in a right frame. She could speak the feeling of women, and that's what we find from the poem My Mother 66. Now I'll move with this one. The poem My Mother 66. Throughout her life, she had been a controversial image. Before her breathing last, sometimes for speaking for women, many people said that she was writing nothing more than the sex in her poetry, and could see everything from that perspective, like sex. But she was very frank to speak it freely and frankly,
before breathing last in 2009. The poem that we're going to study is written in a free verse. It's a kind of free verse poem. Who originated free verse writing? Free verse, which was originated by King James I and was popularized by Walt Whitman in America. Walt Whitman popularized and King James I started. My Mother 66. There are 20 lines in the poem. 20 lines in all. And seems to be a kind of lyric poem. Okay, try to see what is the lyric. When a poet is expressing a very personal thought in a piece, revealing personal feeling or experiences, though there should be music, but it is not necessary that always music should be there. So, poem is called to be a short, personal and poignant, to be called as a lyric. This poem, as just 20 lines are there, is almost feeling that because Kamala Das is talking about her mother, Nalapat Balamani Amma. Was mother of Kamala Das. She is actually speaking. Balamani Amma, who is a 66-year-old here in the poem. The poem has been narrated through the first person narration. First person narration. What is that? If the theme or a story is told by the poet himself or herself using first person pronoun like I or we, so simply we call it to be the first person narration. So the first person narration has been used. It is not strictly any metrical pattern, but yes, we find sometimes the use of iambic and trochaic meter. Sometimes it is iambic, sometimes it's a trochaic meter. You see, iambic is a syllabic pattern where weak sound is followed by strong sound, this pattern, and trochaic is just opposite. Strong sound is followed by a weak sound. Since it is a free verse, so it will not follow any strict metrical or syllabic pattern. But yes, sometimes we find that the poetess is making the use of iambic and sometimes she is using trochaic. You remember that in iambic and trochaic both, the two syllables make 1 meter. Is equal to 1 meter. Just a syllabic pattern is different, like weak is followed by strong and strong is followed by weak. That's the only difference we notice. When we come to the pattern of writing and the use of the literary devices, the first one is enjambment that we find. Now, what is enjambment? It's like running over or jumping over.
Simply, when a thought of the line is not complete in that line and the thought continues even in the next line, so we call that the line is running over, means in one line it's not done, it's not complete, so moving to the next, and that we call to be enjambment. We'll find the use of enjambment in the poem many a time. Here we will focus. The next is caesura. That is a slight pause in the middle of line. In the middle of line, we will find a slight pause. Means sometimes we use comma, sometimes we use semicolon, sometimes we use full stop, and sometimes it's a colon. That is actually in the middle of the line. So we call that it is use of caesura. We'll find the figure of speech like simile, personification, metaphor. Simile, you know, it is comparison with the help of so, like, as, that show the comparison. There is a personification that's used there in the poem that shows the lifeless thing like living thing. Lifeless things like living thing. There is a metaphor, and that is comparison without, or you can say indirect comparison. Comparison without. So, like, as. The next device has been used is tautology. Tautology is repetition of thoughts in different words. Repetition of thought in different words, means the same thing, like you say he was an old man of 100. Simply, if somebody is 100-year-old, we cannot call him to be young. So 100-year-old, 100-year and being extremely old, both are the same thing. But yes, in a different word, we are repeating the same thought that the man is very old. So that figure of is called tautology, that we'll find used here in the poem. The next one is philology. Philology. Now the point is, what is this philology? It is also repetition. Philology is also repetition, and very much similar like repetition figure of speech that shows the repeat of the same word. And one thing also we'll find, that is the use of repeated same conjunction, that is called to be polysyndeton.
polysyndeton is repetition of conjunction. So, polysyndeton is the next one we find as the use of literary device. It is just simply an emphatic part, means किसी भी बात को emphasize करने के लिए, वैसे repetition figure of speech भी इसी को कहते हैं, अगर आप इसको पैलिलॉजी नहीं कहते हैं या फिर इसको आप पॉलीसिंड्रॉन नहीं कहते हैं तो आप इसको सिंपली एक रेपिटेशन कह सकते हैं, क्योंकि रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच का भी सेम फंक्शन होता है कि किसी भी बात को, किसी भी वर्ड को वो रिपीट करता है। और जब भी हम किसी बात को रिपीट करते हैं तो सिंपली वी एम्फेसाइज द थॉट, हमारा थॉट पर एम्फेसिस होता है, दबाव होता है, हम चाहते हैं कि उस बात को ज़्यादा गहराई से कहा जाए। So that is what we find here in the poem. And now it is time for us to move with the text. अब चलिए हम लोग देखते हैं text of the poem. Actually it seems like poetess is coming from somewhere and she is actually taught in a kind of memory related to her mother. और the point is actually about time and death. किस तरह से जो डेथ होती है वो धीरे धीरे करते हुए किसी भी पर्सन की लाइफ में एंटर कर जाती है एंड पर्सन को इसका एहसास भी नहीं हो पाता है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म सी हो गई है, एंड सी हो गई। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द लाइन। Driving from my parents' home to Cochin. See, she is going to Cochin. प्लेस का नाम कई बार पूछा जाता है तो आपको पोएम के जरिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखती हैं एंड शी यूज्ड दिस सिंपल लैंग्वेज टू कन्वे डीप थॉट। कोचिन प्लेस का नाम है जहाँ के लिए वो जा रहे हैं। दैट्स व्हाट इज शी स्टार्ट। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। टाइम सेटिंग देखेंगे तो फ्राइडे मॉर्निंग। दैट्स द टाइम सेटिंग। कोचिन इज अ प्लेस दैट शी इज गोइंग। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। बहुत कम होता है कि बच्चों को वक्त मिले अपने पेरेंट्स को देखने का, अपने पेरेंट्स को समझने का। देखिए, देखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम रोज उनसे मिल तो रहे हैं, क्योंकि हम मिल के भी उनसे नहीं मिल पाते हैं और बहुत मुश्किल, जिसे मैंने कहा ना, बहुत मुश्किल होता है। मेरा तो मानना है कि अगर 100% में अगर हम दिए तो केवल 5% लोग ऐसे होते हैं जो सच में अपने पेरेंट्स को मिल पाते हैं, स्पेशली उनके लास्ट वक्त में उनको समझ पाते हैं। 66 ईयर ओल्ड बालामणि अम्मा इज देयर और पहली बार कमला दास उस पर फोकस कर रही हैं कि अब अम्मा की वो एज नहीं रही, अब अम्मा की उम्र हो गई। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पेरेंट्स उसके लिए हमेशा एक मिसाल होते हैं और कभी वो अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि कितना भी बड़ा हो जाए, जिंदगी को समझ लेता है, मौत को समझ लेता है, लेकिन अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता। थोड़ा सा फीलिंग देखिएगा, वो डर देखिएगा जो इनएविटेबल है, क्योंकि एक बात तो सत्य है, द डेथ इज इनएविटेबल, इट इज श्योर इट विल हैपन, लेकिन फिर भी हमें डर लगता है और हम बचने की कोशिश करते हैं इससे और अपनों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले फ्राइडे मॉर्निंग की बात है जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोचिन के लिए जा रही थी। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी।
मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे ही बगल में थी। अब देखिए लाइन के बीच बीच में कॉमा लग रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं सीजुरा। और एक लाइन खत्म नहीं होती है, दूसरी लाइन में आ जाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या है, इंजैममेंट। आप लगभग सारी लाइन में ऐसा एक्सप्रेशन पाएंगे इंजैममेंट का और इसका। रनिंग, ड्राइव, डोज्ड, अनओपन माउथड। थके हारे जब आप सोते हैं तो क्या होता है, आपके मुंह खुले रह जाते हैं। हर माउथ, हर फेस आशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन। कभी बुजुर्गों का चेहरा देखा है? साथ में बैठ के कभी देखिएगा, उनके चेहरे पर पड़ी हुई जो लकीरें होती हैं ना, वो उनकी मशक्कत, उनकी मेहनत, उनकी परिश्रम, उनके दर्द की कहानी को बयां करती हैं। इतनी आसान जिंदगी थी नहीं जितनी आसानी से वो जी गए। आज हम सारे लोग मटेरियलिस्टिकली बड़े अफ्लुएंट हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं है, सारे संसाधन हैं, साधन हैं, इसके बावजूद हम समझ रहे हैं कि हमारी लाइफ को जीना कितना मुश्किल है। जस्ट इमेजिन कि वो दादी माँ जो 60 साल पहले की लाइफ को जी, जहां पर ऑलमोस्ट कोई वजूद नहीं था, स्पेशली अगर लेडीज की बात की जाए तो कैसे जी गई होंगी वो मां, कैसे जी गई होगी। एक बार उसकी चेहरे पर नजर तो डालिए, उसके चेहरे पर पड़ी हुई लकीरें उसकी जिंदगी की दास्तां आपको बताएंगी। आज पहली बार मां को मैंने देखा जो मेरे ही बगल में थी, थोड़ी सो गई थी। सोने के बाद ओपन माउथ, उनका मुंह खुल गया था। हर फेस आशन लाइक ऑफ अ कॉप्स। उनका चेहरा इमोशनलेस दिख रहा था, लाइफलेस दिख रहा था, जैसे कि चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही ना हो। कैसे? जैसे कि कॉप्स, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है। सिमिली का यूज देखिए, जैसे कि एक डेड बॉडी होती है, जिस इमोशन में खत्म होती है उसी इमोशन में रह जाती है। सिमिली का यूज किया लाइक की मदद से। उसी तरह से आज मेरी मां का ये जो चेहरा है, रियलाइज्ड विद पेन, वह दर्द से भरा हुआ है। कभी मां, स्पेशली पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने दर्द को अपने बच्चों को नहीं दिखाते हैं। क्या दर्द उनको है, क्या तकलीफ उनको है, वो उनको बताते ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके दर्द की वजह से उनके बच्चे परेशान हों। इसलिए वो अपने चेहरे में, अपने मन में वो दर्द को छुपा लेते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे कहा ना कि जो बुजुर्गों का चेहरा होता है उसको क्यों देखना है, उसको देखना इसलिए है ताकि महसूस हो कि इन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की है, इन्होंने कितना परिश्रम किया है इस जगह तक पहुंचने के लिए। आसान नहीं था ये जिंदगी का सफर, आसान नहीं था उस जिंदगी के चैलेंज को फेस करना जहां पर कुछ भी नहीं था और आज सब कुछ है। हमने कुछ नहीं से सब कुछ की सफर को पूरा किया है। उस दौर को किसी के चेहरे पर आप पढ़ सकते हैं, किसी बुजुर्ग की चेहरे पर पड़ी हुई लकीरों से पढ़ सकते हैं। और वैसे तो आपको हमेशा झूठ बोलेगा, अरे नहीं नहीं कुछ भी पूछो, माँ दर्द है क्या, अरे नहीं दर्द नहीं, बस ऐसे ही। पापा आपको कुछ तकलीफ है क्या, नहीं क्या तकलीफ है, सब ठीक है बढ़िया, अब कोई बात नहीं, कोई अपना काम करो। मतलब व्हाट दैट। जब वो सो जाते हैं या कभी ऐसा वक्त होता है आसपास बैठने का, शांत, एकदम से अचानक से शांत होते हैं, कुछ बात उनके दिमाग में चलती है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसमें उनका चेहरा एकदम से उस बात की वजह से एकदम से सूख सा जाता है, मुरझा सा जाता है, दर्द अचानक से उनके चेहरे पर दिखने लगता है। सोई हुई मां के चेहरे पर वो दर्द दिख रहा है, पेन, और साफ तौर पर दिख रहा है। मां रियलाइज्ड विद अ पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड।
फिर से सिमली का यूज देखिए, वो सच में मेरी माँ अब माँ बूढ़ी हो गई है। अब यहां समझने की कोशिश करिएगा, शरीर से तो वो दिखती ही है, मानसिक रूप से भी वो बुजुर्ग हो गई हैं, वो उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी बूढ़ी वो दिखती हैं। देखिए, दो तरह की जिंदगी होती है, दो तरह की हमारी सोच होती है। एक शारीरिक जिंदगी होती है जो हमें शरीर से दिखती है, दूसरी हमारी मानसिक होती है जो हमारे दिमाग से चलती है। कई बार हमारी उम्र हो जाती है फिर भी हम लोग बुजुर्ग नहीं होते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, जिंदगी के बहुत मुसीबतों से अपने आप को दूर रखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे कभी भी मजाक में कहते हैं ना कि उम्र है 55 की और ख्यालात हैं बचपन के, वो कुछ लोगों में होता है जो बड़े मुश्किल से उसको संभालते हैं। इट्स नॉट ईजी टू लिव योर चाइल्डहुड एट द एज ऑफ 55, है ना। 55 साल के होकर के आप बचपन का उम्र जी लीजिए, ये सोसाइटी वाले जिंदा ना रहने देंगे आपको, है ना। हर बात पे आपको टोकेंगे, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, तो थोड़ा सा वो बात है। बट कुछ लोग फिर भी अपने आप को उस लहजे में रखते हैं, उस तरीके में रखते हैं, उस इमोशन में रखते हैं जहां पर उनको फील होता है कि अभी भी मेरे अंदर बचपना बाकी है। दे कीप इट गोइंग। लेकिन मां, अब वो बात नहीं रही। मां उतनी ही बुजुर्ग हो गई है जितनी बुजुर्ग वो दिखती है। बट सून पुट दैट थॉट्स अवे। मतलब आप समझ रहे हैं, मां बुजुर्ग हो गई है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अगला पड़ाव क्या है? जिंदगी को अलविदा कहने का। आप जस्ट एक पल के लिए ये सोच के देखिए, एक बच्चे को क्या महसूस होता होगा जब उसके ख्याल में ये आता होगा कि उसकी मां अब ज्यादा वक्त उसके साथ नहीं रहेगी। क्या गुजरता होगा उस बच्चे के ऊपर जब उसके मन में यह ख्याल आता होगा कि मेरे पापा अब ज्यादा वक्त मेरे साथ नहीं रहेंगे। शायद हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते जिस एहसास के साथ वो गुजरेगा। इतना डर जाता है कि उस थॉट से खुद को बाहर करने की कोशिश करता है। उसकी हिम्मत जवाब दे देती है कि वो उस थॉट के साथ रहे, वो अपने आप को उस थॉट से बाहर निकाल लेता है। तो वो पोएटेस कमला दास के साथ भी हो रहा है। जैसे ही ये ख्याल आया कि दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि मां सच में उतनी बूढ़ी हो गई है जितनी बूढ़ी वो दिखती है। जैसे ये फील हुआ कि बुढ़ापे के बाद अगली उम्र क्या होती है, कमला दास डर जाती हैं। इसलिए वो उस थॉट को ही चेंज करना चाहती हैं, बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन जल्द ही कमला दास ने इस थॉट, इस ख्यालात को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश किया एंड लुक्ड एट अ यंग ट्री। और सामने एक यंग ट्री दिख रहा था, उसकी ओर देखने लगी। स्प्रिंटिंग, जो नई एनर्जी के साथ स्प्रिंट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। स्प्रिंटिंग, बढ़ना या नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ना, इज हियर पर्सनिफिकेशन। यहां जो यंग ट्री दिखाया गया है, उस यंग ट्री को पर्सनिफाइड किया गया है, स्प्रिंट करता हुआ, बढ़ता हुआ। जैसे आम इंसान जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक नौजवान पौधे की तरह ही होता है। उस बच्चे में ढेर सारी एनर्जी होती है, ढेर सारी ऊर्जा होती है, जिंदगी का कोई गम नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है, फ्री होता है, कोई बाउंड नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन वही जब बड़ा होता है तो मेरी मां की तरह हो जाता है, उसके चेहरे पर वो दर्द दिखता है। तो लाइफ कंट्रास्ट में जा रही। एक और मां है जो जिंदगी की आखिरी ओर जा रही है, और एक ये चाइल्ड है जो स्प्राइट कर रहा है, ट्री के रूप में एक पौधा है, नया जीवन पा रहा है, उग रहा है। दोनों इमेजेस कंट्रास्ट हैं। जस्ट उन्होंने उस थॉट का अपोजिट लिया जिस थॉट से वो डर गई थी। जिस थॉट में उनकी मां उनको छोड़ के जा रही थी, उसको छोड़ दी। वहां से हट करके वो सीधे उस थॉट पे आई जहां पर उनको यंग ट्री दिख रहा है, स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर होम्स। अगला इमेज फिर खूबसूरत सा लिया, मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, खुशियों में झूमते हुए, मुस्कुराते हुए
नई दुनिया को दिखाते हुए ये चिल्ड्रन, एक बार फिर मेटाफर का यूज यहां पर मेरी चिल्ड्रन के साथ है, खुशियों में झूमते हुए ये जो बच्चे हैं वो खुशी की तरह लहराते हुए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जैसे मैं एयरपोर्ट पर पहुंची और एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हुई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, मैं थोड़ी दूर खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, एक बार फिर से मैंने मां को देखा। बार बार ख्यालात कोशिश कर रही हूं मैं बदलने की। मैंने जानबूझ करके वो यंग ट्री को देखना शुरू किया था, मैंने जानबूझ करके वो मेरी मेकिंग चिल्ड्रन की ओर देखा था, खुशियों में झूमते हुए बच्चों की ओर देखा था। यह सोचा था कि इस ख्याल से मैं बच जाऊंगी। लेकिन जैसे ही फिर से सिक्योरिटी चेकअप के लिए एयरपोर्ट पे हम लोग रुकते हैं, मां मेरे सामने खड़ी थी। वैन प्रेयर, दैट इज एकदम से कमजोर, इसी को हमने कहा था टोटोलॉजी है, यहां पर टोटोलॉजी है, दोनों का सेम अर्थ है, कमजोर दुबली पतली। एज अ लेट विंटर्स मून, कैसे? जैसे कि यह विंटर के आखिरी वक्त का मून हो। फिर से एक बार सिमली का यूज किया हुआ है, लेट विंटर्स मून, एंड फेल्ट दैट ओल्ड। सच में मां काफी पुरानी लग रही थी, फैमिलियर एक जाना पहचाना सा दर्द एहसास होता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरे बचपन का दर्द था। आपको मालूम है बचपन में सबसे बड़ा दर्द कौन सा था? मां को खो देने का। आज हो सकता है प्रायोरिटी लोगों की बदल जाती है, लेकिन बचपन में तो सिर्फ एक ही दर्द था, एक ही डर था। कोई बस इतना कह दे कि तुम्हारी मां गई, बच्चा रोने लगता है। कई बार तो ऐसे मजाक मजाक में कोई बोल देता है बच्चे से कि तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। जो जोर जोर से वो रोता है, जोर जोर से रोता है, वो बचपन का खौफ है, बचपन का डर है। सिर्फ एक चीज को खोने का डर था बचपन में, और वो थी मां। आज फिर से उस मां को खोने का दर्द उभर आया है। एक बार फिर से मेरे बचपन का दर्द मेरे जहन में उतर आया है। मेरे नजर के सामने वो बचपन का दर्द फिर से दिख गया है। कैसे मां को खोने का जो दर्द होता था, जो पीड़ा होती थी, जो एक होती थी, वो एक बार फिर से मेरे नजरों के सामने थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। पता नहीं कल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। डर तो गई थी, मैं बहुत डर गई थी, लेकिन मां को नहीं दिखा सकती थी ना, क्योंकि अगर मैं मां को अपना दर्द दिखाऊंगी तो मां मुझे डरने नहीं देगी ना। तब मेरी बारी थी। किस तरह बचपन भर मां ने हर दर्द को अपनी मुस्कान में छुपा लिया था। कितनी भी बड़ी परेशानी रही हो, मां से जब पूछा तो उसने मुस्कुरा के ही जवाब दिया था। आज मेरी बारी थी। मां को खोने का दर्द है, मां को खोने का गम है, लेकिन मां को अपना यह दर्द नहीं दिखा सकती। इसलिए मैंने कहा सी यू सून अम्मा, मिलती हूं अम्मा। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल स्माइल। कर ही क्या सकती थी, क्योंकि जिंदगी का दस्तूर ही है सबको छोड़ के जाना है। आज मैं जा रही हूं अम्मा को छोड़कर, मेरे पास टाइम नहीं है अम्मा के पास रुकने का। दर्द है, तकलीफ है, एहसास है, लेकिन मैं अम्मा के साथ रुक नहीं सकती। जिंदगी का यही तो दस्तूर है कि सब इसमें मजबूर है। किसी के पास मजबूरी के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। That was the mother of Kamala Das at 66. That is
ऑल मदर अराउंड द वर्ल्ड आर, दुनिया की सारी माएँ ऐसी ही होती हैं, बट सारी औलादें कमला दास जैसी हों ये रेयर है, जिनको अपनी माँ के दर्द का एहसास हो, जिनको अपने पापा के दर्द का एहसास हो। क्योंकि आज की कहानी बिल्कुल उल्टे है। खास तो वृद्धा आश्रम में माएँ मिलती हैं, वृद्धा आश्रम में पिता मिलते हैं। छोटा सा घर हो गया है, घर जितना छोटा हुआ से कहीं ज्यादा छोटा हो गया है लोगों के मन का घर। उस घर में कोई नहीं रहता है अब। ये लोगों के मन का जो घर है अब सिर्फ मैं रहता है। मेरे अलावा कोई नहीं रह गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं। मां भी नहीं रह गई है। तो इसलिए मैंने कहा कि मां तो सारी वही हैं जो बालामणि अम्मा थी 66 की, वो दुनिया की सारी अम्मा है। लेकिन कमला दास की तरह कोई अपनी अम्मा का दर्द देख पाया है, कोई महसूस कर पाया है, किसी को इस बात का रियलाइज भी हुआ है कि अम्मा आज हमारे साथ है, कल नहीं होगी। उसका दर्द क्या है, उसका पीड़ा क्या है, पता नहीं, शायद नहीं। बड़ा मुश्किल होगा मुझे कहना कि मैं कहूँ कि हाँ इस पीढ़ी के पास इतना वक्त होता है, शायद नहीं। Okay, that's all from me. Thanks a lot for watching. Keep watching, keep learning, keep working hard. Thank you very much.